Fine. Good evening to all of you. So today I will be starting the basic topic of UPSC Civil Services exam. In the morning, every day I do take the newspaper analysis classes as well. So Yash, Riddhi, Kajal, and Swapnil, all of you are requested to send the class request from the ID. And if you are free in the morning, then you can join the newspaper analysis classes as well. Now, as I have discussed with you earlier, I think almost all of you are going to do exam in 2025 or 2026, since all of you are undergraduates or must be pursuing your graduation. तो हमारा जो टाइमलाइन जो होगा that coming 8 to 9 months we will be studying the basics of all the topics which are included in UPSC Civil Services exam. जैसे पहले भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि UPSC there are around 7 to 8 subjects which you need to study, and you need to study the basics of all these subjects, and you need to interlink all these subjects with each other. So in UPSC Civil Service exam, we do have the basic subjects like Indian polity, Indian history, Indian geography, Indian economy, then environmental issues. Then we are also having some of the other miscellaneous topics like international organization, internal security, disaster management, etc. पर ये जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, the other subjects, these all subjects are basically connected with 4 important basic topics in civil services exam. So which are those basic subjects? One is called Indian polity, in which we do study the Indian political system. Second important topic is Indian history, in which we study the Indian history right from Indus Valley civilization. And third important subject is Indian economy, where we will be studying the basic structure and problems and issues associated with the Indian economy. And lastly, we will be studying the geography, because all these topics, that is economy and history and polity, all these are dependent on Indian geography. तो नॉर्मली जब यूपीएससी एग्जाम को प्रिपरेशन के लिए जब स्टार्ट किया जाता है, तो आई नॉर्मली सजेस्ट टू स्टार्ट इट इंडियन ज्योग्राफी. But again, Indian geography is a very technical subject. It is very, there you have to study the basics of science, etc. To just create an interest in UPSC Civil Services exam, I'm starting with Indian polity. Because Indian polity, because we know that Indians are very much interested in politics. तो पॉलिटिक्स से जब हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट आता है. तो एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी द पॉलिटिक्स. हम पॉलिटिक्स को नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी स्टडीइंग द इंडियन पॉलिटी. So why we need to study Indian polity? Because if you know the Indian political system, what is the meaning of this term? Like जब भी आप यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए कि उस टर्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है. That may be with related to the subject itself, like what is history, what is economy, what is polity, or what is geography, or what is environment, or what is atmosphere. ये जो बेसिक जो टर्म्स होते हैं उसका मीनिंग अगर आपको सही तरीके से अगर समझ में आ जाएगा, तो योर कंसेप्ट विल बी वेरी क्लियर. तो द सब्जेक्ट व्हिच आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट टुडे, दैट इज कॉल्ड इंडियन पॉलिटी. So we are not going to study political science. Political science is altogether a different subject where we study the science of politics. But हम अब यहाँ पर जो एज ए जीएस सब्जेक्ट, जो यूपीएससी एग्जाम के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, वो हम पढ़ रहे इंडियन पॉलिटी. So what you need to remember that in this Indian polity subject, we will be trying to understand the political system of India. मतलब political system of India का मतलब क्या, कि इंडिया का political system कैसे है, इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है, then how the president of India is elected, how the member of parliaments are elected, how what is the structure and composition of Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabha, then what is governor, then what are the rights of the citizens of the country, what is the role and responsibility of the government. ये सारी चीजें बेसिक में हम उसको समझेंगे. फिर उसके बाद like once we understand all this basic political system in India, then उसके बाद में of course ये जो political system जो create किया गया है, that of course all of you must be knowing that the political system of India is derived from the constitution of India.
मतलब जितने भी सारे ये पॉलिटिकल सिस्टम है, ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस के द्वारा बनाए गए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में उससे रिलेटेड कुछ प्रोविजंस है। तो शुरुआत में वी विल बी स्टडी द बेसिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, we will be studying what are the features in Indian constitution with respect to the political system in India. उसके बाद like maybe after 2 months or after 3 months, once you study the basics of Indian political system, ये जो political system जो बनाया गया है, इसको लेकर कुछ issues करंट में चलते रहते हैं। जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, जैसे कि जुडिशरी सिस्टम है, पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, देन लोकसभा का इलेक्शन है, देन विधानसभा का इलेक्शन है, सम पावर्स आर गिवन टू द चीफ मिनिस्टर, सम पावर्स आर गिवन टू द गवर्नर, सम पावर्स आर गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सम पावर्स आर गिवन टू द जुडिशरी ऑफ इंडिया, देन इंडियन जो सिटीजन्स है उनके कुछ राइट्स हैं। ये सारी चीजें जैसे बेसिक आपको समझ में आ जाएगा, इन सारे चीजों को लेकर कुछ इश्यूज हैं, देयर आर सर्टेन इश्यूज एसोसिएटेड विद ऑल दिस the system which we have created as a modern political system. So that's what you will understand once you clear your basic ideas, और once you clear your basic political system के जो चीजें वो आपको समझ में आ जाएंगी, तो issues ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है? So my medium of instruction or my medium of the guidance will be like English. मैं English में पढ़ाऊंगा या English में हम उसको समझेंगे। Suppose if you don't understand like whatever I am explaining to you, then you can ask me, you can raise your hand and you can ask me question. Got it? Riddhi, Kajal, आपको like whatever I will be explaining to you, majority of the things I will be explaining in English to you, but if you don't understand whatever I'm explaining to you in English, you can raise your hand, I will be there to explain you in Hindi. Okay? Meanwhile I will be also explaining all this concept in Hindi. Clear? So let's start with Indian polity. So Indian polity, as I already told you, that we need to study the political system of India. So first try to understand what are the basic topics which has been included in UPSC syllabus. तो वैसे तो बहुत कुछ पढ़ने के लिए है, there are so many things which we need to study as a UPSC aspirant in Indian polity or Indian political system, but we'll try to understand what exactly is mentioned in the syllabus of the UPSC, because I always say, like when you study for UPSC, you need to study it systematically. Like in the beginning or whenever I was taking the one-to-one session with you, I told you people that more than 5 to 6 lakh people apply for this exam, and out of that only around 1000 to 1100 or 1200 students finally get selected for this exam. One of the reasons that why only those 2000 to 1100 students get selected in UPSC exam is that they study systematically. So one of the important aspects of studying UPSC systematically is knowing the syllabus properly. मतलब जब भी कोई सब्जेक्ट, जब भी कोई टॉपिक आप जब पढ़ना शुरू करोगे, उससे सबसे पहले आपको देखना जरूरी होता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्या मेंशन किया है। इससे एक फायदा ये होता है, बिकॉज यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड और यू विल नॉट गेट डेविएटेड, बिकॉज उस टॉपिक को लेकर, उस सब्जेक्ट को लेकर हमें पीएचडी नहीं करना है, या उस टॉपिक में हमें बहुत ज्यादा डीप में जाकर पढ़ाई नहीं करना है। यूपीएससी ने सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, जो टर्म्स मेंशन किए हैं, उसको अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। सो यू कैन सी इंडियन पॉलिटी इज इन जीएस पेपर 2, मेंस एग्जाम का जो जीएस पेपर 2 है, उसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में कहा गया है। So what you are supposed to study in Indian polity? First and very very important thing which you need to study, that is Indian Constitution. Now, why we need to study the Indian Constitution? Because all the provisions with respect to the Indian political system, India के जितना भी political system is related, जितने भी सारे provisions है, all they are derived from Constitution of India. ये सारे चीजें हमारे Constitution of India से derive किए गए। That is why first we need to understand the basic concepts which have been associated with the Indian Constitution. So we will be starting with the Indian Constitution first. Then in Indian Constitution, उसमें हम exactly क्या समझेंगे? We will be studying the evolution of Indian Constitution. मतलब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, who have created the Indian Constitution or who have written or drafted the Indian Constitution, that we will be studying. Then of course जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था, all of you must be knowing that Indian Constitution was completed in 1950. It is being enacted or it is being implemented from 1950. 26 जनवरी 1950 से किया गया था।
लेकिन उसके बाद ऐसे नहीं है कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में बनाया गया था इट इज अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, ऐसे नहीं। जैसे जैसे जरूरत पड़ी, जैसे जैसे द न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू इश्यूज अराइज, then we have made certain changes in our constitution. So that is what is called as amendment. तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, उसकी प्रोसेस क्या थी, उसका मेथड क्या था, उसको हम समझेंगे। देन वी विल बी स्टडीइंग द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, then powers of the president, powers of the prime minister, powers of the chief minister, powers of the governor, then structure and composition of the parliament, that is what is Lok Sabha, what is Rajya Sabha, how the members are elected, how the Rajya Sabha members are elected, then ये सारे फीचर्स में हम डिस्कस करेंगे। सर्टन स्पेशल फीचर्स लाइक आर्टिकल 370 और certain important constitutional bodies like UPSC और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स हैं, इस फीचर्स को हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद जैसे ये जितने भी सारे फीचर्स 1950 में बनाए गए थे, इन सारे फीचर्स में कुछ अमेंडमेंट्स हुए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट? अमेंडमेंट्स मींस देयर आर सर्टेन चेंजेस और देयर आर सर्टेन दुरुस्ती, कैन से देयर आर सर्टेन कुछ बदलाव किए गए। नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था 1915 में वो वही वैसे ही डॉक्यूमेंट आज भी है, ऐसे नहीं है। जैसे जरूरत पड़ी, जैसे नए नए प्रॉब्लम्स आए, जैसे जैसे नए इश्यूज आए, जैसे जैसे आइडियोलॉजी चेंज होती गई, वैसे वैसे उसमें कुछ बदलाव किए गए, उसमें कुछ चेंजेस किए गए, कुछ नए प्रोविजंस ऐड किए गए, कुछ पुराने प्रोविजंस में चेंजेस किए गए और कुछ प्रोविजंस को निकाल दिए गए, लाइक सम ऑफ द प्रोविजंस हैव बीन डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। So the next important topic which we'll be studying in Indian political system will be like what are the amendments, इसको हम देखेंगे, right? So when we will be studying the Indian Constitution, शुरुआत में हम evolution देखेंगे, then features देखेंगे, then of course the remaining topics like what are the functions and responsibilities of the union government and state government. Because as I told you in the beginning, जब भी आप as a IAS या as a IPS officer जब आप काम करेंगे, you have the responsibility of implementing the policies, you have the responsibility of implementing the laws, you have the responsibility of implementing the decisions taken by the government. In India, we do have or three levels of the government. One is called union government, जिसे popularly central government कहा जाता है, जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है, and then we do have the state government. तो इंडिया में कुछ state governments भी है, जैसे in India there are around 29 states and some union territories, and the powers and functions and responsibilities of the union government and the state governments are different. ये तीनों दोनों गवर्नमेंट के जो responsibilities है, उनके जो functions है वो different है। देन ऑफ कोर्स जो फंक्शन जो डिवाइड किए गए फॉर द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको लेकर कुछ इश्यूज है। इश्यूज जो है हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज पहले तो हमें क्या समझना है, बेसिक समझना है, देन वी नीड टू स्टडी द इश्यूज। Like why I'm telling to you like why we need to study the issues later on, because the questions which are asked in prelims exam is related to the basics। जो बेसिक्स होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो मेंस एग्जाम होता है, इन मेंस एग्जाम द क्वेश्चंस आर आस्क्ड विद रिस्पेक्ट टू द इश्यूज। तो मेंस एग्जाम का प्रिपरेशन वी विल बी स्टार्टिंग मे बी आफ्टर 7 to 8 months once we are done with the basics, and current affairs भी हम उसके बाद में शुरू करेंगे। So that's what you need to study. So basically we will be studying the functions and responsibilities of the union government and state government. We will be also studying the separation of power between union government and state government, and we will be comparing Indian constitution with other countries, because India का जो constitution बनाया गया है, constitution of India, that has been कुछ उसके जो provisions है वो दूसरे country से लिए गए हैं, because in 1950 में जब constitution बनाया गया था, when Dr. Baba Saheb Ambedkar was trying to draft the constitution according to the needs and demands of the Indian society, in Indian you can say the India की जो situation है, India की जो हालत है, उसके accordingly डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया। So when he was trying to make the draft of the Indian constitution, he has tried to take certain provisions from other constitutions. Other constitutions मतलब constitutions like America, then some of the provisions were taken from England, some of the provisions were taken from Canada, some of the provisions were taken from France, some of the provisions were taken from other countries like Ireland, Australia, etc.
तो हम what will we be trying to understand, like we will be trying to compare the Indian constitutional scheme with that of other countries. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसे है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कैसे है, और कंपेयर टू दैट अमेरिका का कैसा है, देन व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लैंड, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ब्राजील, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ साउथ अफ्रीका, और व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ चाइना. इन सारे चीजों से हम इसे क्या करेंगे, वी विल बी ट्राइंग टू कंपेयर विद दैट. ठीक है. Then next important topic which we'll be studying is, as I earlier told you, parliament and state legislature, their structure, their functions, how the business is conducted, what are the powers given to the Parliament of India, and what are the issues arising out of this. So that we will be discussing mains class. So this is all we are going to study. Apart from that, one more important topics on which the questions are regularly and frequently asked in mains exam, that amendment to the various constitutional posts. So appointment to the various constitutional posts. Constitutional posts like President of India, Prime Minister of India, Member of Parliament, MLAs, then Governor. इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? Some of them are appointed, some of them are elected, and what are the powers given to all these constitutional posts? ये सारे constitutional posts को क्या power दिए गए हैं? That also we will be discussing. ठीक है? So then what are the functions and responsibilities? That also we will be discussing in detail in the basic class. The next is policies वगैरह जो है वो मेंस एग्जाम के बाद हम देखेंगे. So as I told you that when we will be studying the Indian Constitution, then what should be the source of studying this? ये सारे जो टॉपिक्स हम जब स्टडी करेंगे तो उसका इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होगा? जैसे मैंने इन द इंट्रोडक्शन क्लास एज वेल एज इन द ओरिएंटेशन क्लास मैंने आप सभी को बताया था कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि सिस्टमैटिक प्रिपरेशन में वन थिंग इज इंपॉर्टेंट, दैट यू नीड टू नो द सिलेबस प्रॉपर्ली. सेकेंड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे स्टूडेंट मिस करते हैं पिछले 3-4 साल से, दिस इज वन थिंग विच इज मिसिंग in the students who are preparing for UPSC. And what is that thing is that these students are not aware about the recent trends of the exam. Majority of the students are working hard, like they are studying for UPSC for 5 years, 6 years, 7 years, they are studying it. उसके बावजूद भी वो यूपीएससी के एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं या क्रैक नहीं कर पा रहे. लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि within just 1 year or 2 years of preparation, they are cracking this exam, they are qualifying this exam. Now, what is that thing which makes them separate or which makes them different with the students who are working very hard? And that is that they do know the recent trend of the exam. इस एग्जाम का recent trend क्या है वो उन्हें पता है. तो recent trend में 2 से 3 चीजें आती हैं. एक तो सबसे पहला है कि the recent trend of the sources from which the UPSC is asking the question. Because अगर आप गूगल में सर्च करेंगे या किसी स्टूडेंट को पूछेंगे या जिसने प्रिपरेशन किया है, those people who have qualified this exam, उन्हें अगर आप पूछेंगे तो they might be giving you a huge list of the books, a huge list of the resources which needs to be studied for UPSC exam, especially कोई भी particular subject के लिए, चाहे वो पॉलिटी हो या कोई भी सब्जेक्ट के. बहुत बार ऐसे हो रहा है UPSC continuously change the sources maybe like after every 4 to 5 years. So as a UPSC aspirant, you need to know that what is that change in the trend of the resources. Like maybe 4 years back or 5 years back, one of the most popular book or maximum questions which were being asked in prelims exam as well as in mains exam was from a book called as Indian Polity by Lakshmikant. तो लक्ष्मीकांत की किताब बहुत पॉपुलर होती है, majority of the student refer to these books. But what I have observed that in the last 3 to 4 years or maybe last 2 to 3 years, UPSC is not asking question directly from that book. Yes, that book is very good for understanding the basic, understanding the Indian political system. But what is problem with that book is that the questions are not directly asked from that particular book. So along with Lakshmikant, I will be suggesting you 2 more important sources from which the UPSC is asking the question. One is 11th standard NCERT. All of you please note it down. I will be again sharing with you this document with you. One is that the 11th standard NCERT, that is called Indian Constitution Act 1. So what is there in this book that कि India का constitution कैसे work करता है? Like this book has information and the information with respect to what are the features of Indian Constitution,
and how this Indian Constitution is practically implemented from 1950. मतलब जब से ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया गया है 1950 से, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तब से अब तक मतलब 2005 या 2010 तक कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को implement किया गया, that is what is explained very well. So I have observed that both in mains as well as in prelims exam, majority of the questions are directly asked from that particular NCER. So that's what you need to read. Then you also need to refer some an online source, and that online source is a platform, or you can say a portal is there which has information with respect to the Indian Constitution. So I will be sharing the link, I will be sharing you the document, and I will be also sharing with you the Indian Polity book, which is by Lakshmikant. But by just reading Lakshmikant, it is not enough for you to qualify this exam. All of you understood? तो ये तीन resources आपको refer करना है while studying the UPSC for Indian Polity subject. So today I will be starting with the preamble of the Indian Constitution. तो अगर आपको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो सबसे पहले और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो गिव मी अ सेकंड, आई विल बी शेयरिंग विद यू अ लिंक व्हिच यू कैन आल्सो टेक इट फ्रॉम द इंटरनेट. वो आपको क्या करना है, वहां से रेफर करना है. आई विल आल्सो बी शेयरिंग द अदर डॉक्यूमेंट्स आल्सो. Am I being too fast? अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं तो प्लीज लेट मी नो. आई विल बी स्लो. Can you all see the PDF document on your screen? Is it visible to all of you? Usaid, Sahil, can you see the preamble of the Indian Constitution on your screen now? Yes, sir. Okay, fine. So, what is preamble of the Constitution of India? Constitution क्या है वो हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. The topic which I am discussing with you today is the preamble of the Constitution of India. So, what is this preamble? Basically, is that as whenever we do anything, we need to have an objective. Like जब भी हम कोई चीज हम करेंगे तो सबसे पहले हमें हमारे पास में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि why we are doing this thing. So when our constitution makers in 1946 they started making the Constitution of India. So there was one committee called Cabinet Mission, and which has created the Constituent Assembly. I will be discussing this in detail when I will be discussing the modern Indian history.
तो उस समय में हम डिस्कस करेंगे व्हेन ब्रिटिशर्स वर लिविंग इन इंडिया, when they have decided to give independence to India in 1946, there was one body created as per the cabinet mission plan, and that body is called as Constituent Assembly. So Constituent Assembly, when they gather together, like there were so many members in that Constituent Assembly, all the members from the India, some of them are from the princely states, some of them were from the provinces of India. All of them, they have sit together and they have decided that what should be the objective or making of this constitution. So that is reflected in the preamble of the Constitution. So what is preamble? Preamble is basically when it gives three important information to us. One of the important information is the Constitution helps us in understanding that what is the nature of Indian Constitution. Like the preamble तीन important information हमें देता है. सबसे पहले important चीज होता है that is what is the feature or what is the nature of Constitution of India. हमारे Constitution का nature क्या है वो explain करता है. Second, what is the objective of the Constitution of India? Like what are the objectives, that also we'll come to know. And last and very very important thing which we come to know, that is what is the source of the Constitution. मतलब ये Constitution of India को किसने बनाया है या किसके लिए बनाया गया. That's what we come to know when we study the preamble of the Constitution of India. Okay, so what is mentioned here, that the preamble of the Constitution. Preamble का मतलब होता है प्रस्तावना. In Hindi it is प्रस्तावना. In Marathi we call it as a प्रस्ताविका. So हमारे Constitution का एक प्रस्तावना है. It is just a one-page document, but this one-page document help us in understanding the philosophy of the Indian Constitution. मतलब इंडिया का जो Constitution है उसकी overall philosophy क्या है. हम ये why we have created this Constitution, what are the objective of our Constitution, what our Constitution tries to achieve, मतलब हम क्या हासिल करना चाहते हैं as a nation, as a country, हम क्या हासिल करना चाहते हैं. All these things are reflected in a Constitution of India. So some people call the preamble of the Indian Constitution as a mirror of the Indian Constitution. इसे हम हमारे Constitution का आईना कहते हैं. And some people also call the preamble of the Indian Constitution as a guiding torch. मतलब जब भी कोई चीज हम करेंगे, लाइक हम मतलब एज अ नेशन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करेंगे या प्राइम मिनिस्टर करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे, सो ऑल दीज पीपल नीड्स टू follow the objectives, they need to follow the principles, they need to follow the philosophy which is reflected in the preamble of the Indian Constitution. तो अगर आपको इंडिया का प्रियम्बल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, वो पूरी अच्छी तरीके से अगर समझ में आएगा, then you will be understanding on the features and structures and composition of the Indian Constitution. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस बनाए गए, provisions with respect to parliament, provisions with respect to the rights of the citizens, provisions with respect to the powers which is being given to union government, state government and all these authorities in India. इन सारे चीजों को जो पावर दिए गए हैं वो किस वजह से दिए गए और क्या इसकी मंशा थी. All these things you can come to know by understanding the preamble of the Constitution of India. So that's what you can see. The preamble to the Constitution is a reflection of the core constitutional values. हमारे Constitution के क्या values हैं वो हमें समझ में आ जाते हैं when we study the preamble of the Constitution of India. So the Constitution of India declares that India to be a sovereign, socialist, secular, democratic republic. जब आपने स्कूल में पढ़ा होगा, like you must have recited the preamble of the Indian Constitution in your school. आपने स्कूल में ये आप during the morning prayers you must have recited. But क्या होता है, like when we recited in the schools, we did not know the exact meaning of all these terms which are mentioned in the Constitution of India. So you can see, as per the Constitution, the first line of the preamble of the Constitution, what is mentioned, that we, the people of India. So what is this we, the people of India? We, the people of India is the source of the Constitution of India. मतलब Constitution of India का जो Constitution है वो किसने बनाया है? The people of India, right? All the people, of course, the people who were living in India when it was being written, that is from 1946 to 1950. मतलब उस दौरान में जब Constitution बनाया जा रहा था by our Constitution makers, वो हैं. उसके बाद जो इंडिया में थे, लाइक फ्रॉम 1950 टू 2023 तक जितने भी सारे इंडिया में जो लोग थे, उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है या उसमें बदलाव किए.
जैसे जैसे उसमें जरूरत पड़ी। देन इसके बाद भी लाइक आफ्टर 2023 में इसके बावजूद भी जो इंडिया में जो लोग रहेंगे, all these people are the source and all these people are the founders of the constitution. So ये जो constitution जो बनाया गया ये किसके लिए बनाया गया? This constitution is been written and framed for the people of India. So the first line, that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a, मतलब क्या है कि जो इंडिया के जो लोग हैं हमने एक सोलेम रेजोल्यूशन किया। सोलेम रेजोल्यूशन का मतलब होता है एक पवित्र, यू कैन से वी हैव डिसाइडेड, अब एक पवित्र डिसीजन या पवित्र एम या गोल हमने रखा है। एंड व्हाट इज दैट solemn resolution, that we want to constitute India into a sovereign nation. मतलब हम इंडिया को एक sovereign nation बनाना चाहते हैं, right? So can anybody tell me what is the meaning of sovereign? Yes, Yash, do you know what is the meaning of sovereign? ये टर्म आप इससे पहले कभी आपने सुना था? Have you ever heard this term called sovereign? One of the important objectives, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि preamble of the Indian Constitution reflects and helps us in understanding the nature as well as the objective of the Constitution of India. तो Constitution of India क्या चाहता है कि इंडिया को हम एक sovereign nation बना रहे हैं. So what is the meaning of sovereign? Any idea about it? Yash? Even if you don't know, no problem. Yash, अगर आपको नहीं पता कुछ प्रॉब्लम नहीं, you just tell me whether you know it or you don't know. धीरे धीरे हम सारे चीजें समझ लाएंगे, कोई प्रॉब्लम? No, sir, I don't know. No problem. Yes, can anybody explain me what is the meaning of sovereign का मतलब क्या होता है? Yes, Sahil, what is the meaning of sovereign? सर किसी के कंट्रोल में नहीं सर, इन शॉर्ट इंडिपेंडेंट, नॉट कंट्रोल्ड Yes. बाय एनीवन. Yes, so sovereign का मतलब होता है anything which is not dependent on some other country, some other person or some other entity. So when India became independent in 1947, we declared ourselves as a sovereign nation. सोवरिन का मराठी में और हिंदी में ट्रांसलेशन होता है सार्वभौम. सार्वभौमत्व का मतलब क्या है? Before 1947, when India got independence on 15th of August 1947, India के जो important जो decisions थे, like the laws related to India, the external affair या external policies, like India का दूसरे country के साथ में कैसे relation होना चाहिए, क्या policies होना चाहिए, India का defense कैसे होना चाहिए, all these things are decided by the British government. All these things are decided by whom? That is the Britain, England, because we know 1947 से पहले इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था. So whatever the decisions were taken at that time, the decisions, of course, decisions with respect to the laws, decisions with respect to the various policies, decisions with respect to how to utilize our resources, decisions with respect to anything, like हमारे कौन से कंट्री के साथ में रिलेशंस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, किसके साथ में हमें फ्रेंडशिप करना है और किसके साथ में नहीं करना है. All these things were decided by the Englander. But when India became independent in 1947, when our constitution was created, it means that now India is a sovereign nation. It means that now हमारे जितने भी सारे decisions हैं that are not taken by any other country, we do take our decision. You understood, Yash? What is the meaning of sovereign? Sovereign का मतलब होता है सार्वभौम देश. मतलब हम एक सार्वभौम देश हैं और एक हम सार्वभौम कंट्री हैं कि हमारे डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी अदर कंट्री. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. अब ऐसे तो मैंने कहा कि हम सार्वभौम हैं, but now tell me who takes this decision then? Like as I told you, like India एक सार्वभौम नेशन है, इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है. Then ये सारे जो डिसीजंस हैं ये कौन लेता है? Yes, Bhakti, can you tell me who takes all these decisions with respect to what should be the law, what should be our external affair, what should be how our resources needs to be utilized? All these decisions are taken by who? If you can unmute yourself, Bhakti, you can please. Otherwise, Sagar, you can tell me that who takes these decisions. मैंने कहा कि इंडिया की इंडिपेंडेंट नेशन है, लेकिन इंडिया जब इंडिपेंडेंट नेशन है तो कोई तो होगा जो ये सारे डिसीजन लेता होगा इंडिया में. यस सागर. Sir, which decision, sir?
decisions like what law should be there, or India, whether India should have friendly relations with which countries, how to mobilize our resources, या इंडिया के जितने भी सारे रिसोर्सेस उसको कैसे यूज किया जाए, या क्या पॉलिसी होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए, गरीबी हटाने के लिए, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेता है? ये सारे आप इलेक्टेड जो yes, so these all decisions are taken by government. Of course, some of the decisions are taken by the government, some of the decisions are taken by the parliament, some of the decisions are taken by our judiciary. Got it, Kajal and Yash and Swapnil? मतलब क्या है कि ये सारे जो decisions है as a sovereign nation, all these decisions are taken by our parliament. All these decisions, some of the decisions are taken by our government, some of the decisions are taken by our judiciary. तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में यही देखने वाले हैं कि ये सोवरिन डिसीजंस जो होते हैं, हमारे खुद के जो डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेता है, कैसे लेता है, उसका क्या तरीका है लेने। इज इट क्लियर? ऑफ कोर्स, as I told you that India is an independent nation and people of the countries are the source of this nation, but क्या सब लोग उस डिसीजन को करते हैं? नहीं। हम what we have done, like we have created a system that how to take this decision, and that is what we are going to study in Indian polity, like how these sovereign decisions are taken. Clear? So the Constitution of India declares that India is a sovereign nation, and second important thing, it declares that India is a socialist nation. So this term you must have heard many a times. You must have heard it in books. You must have heard it in newspaper. You must have heard it in in the news. आपने हर जगह पे इस सबको आपने सुना हो, राइट? सोशलिस्ट, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है समाजवादी, राइट? यदि डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाजवादी? ये शब्द आपने कहीं सुना है आपके स्टेट में, आपके वहां पर समाजवादी? रिद्धि एंड काजल, इफ यू कैन टेल मी, बिकॉज यू बिलोंग्स टू यूपी, so this word samajwadi is more in the news in UP. Any idea about it? What is, ये क्या होता है? समाजवादी का मतलब क्या होता है? यस, काजल और रिद्धि, अगर आपको पता नहीं है, नो प्रॉब्लम, धीरे धीरे हम समझ लेंगे उन सारी चीजों को. Whether you know or you don't know, just tell, because I just want to know that what is मतलब आपका लेवल क्या है, वो बस मुझे समझना है. That's it. Kajal, can you please unmute yourself? ठीक है. Yes, साहिल, what is the meaning of socialist और what is the meaning of समाजवादी? ये क्या होता है? ये वर्ड आपने सुना होगा. इंडिया एक समाजवादी कंट्री है, या इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोशलिस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिस्ट? Sir, socialist. I don't know, sir. Exact meaning. आपने सुना है शब्द को? समाजवादी पार्टी आपने सुना होगा. समाजवादी, Yes, sir. Mayawati's party. मायावती पार्टी इज BSP, दैट इज बहुजन समाज पार्टी. Akhilesh Yadav, yeah, there was one more leader called Mulayam Singh Yadav. Then other political leaders yes, like sir, Lalu Prasad Yadav, then Nitish Kumar Yadav. ये सारे जो नॉर्थ इंडिया के जितने सारे लीडर्स है, चाहे वो बिहार में हो, यूपी में हो, इवन इन साउथ इंडिया आल्सो वी हैव some leaders like Deve Gowda etc. These leaders call themselves as a Samajwadi. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सोशलिज्म? तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि as we know that इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, इन इंडिया देयर वाज नो इक्वल सोसाइटी. मतलब जो इंडिया की जो सोसाइटी है वो इक्वल नहीं थी, या इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इक्वल नहीं थी. मींस दैट इन इंडिया देयर वाज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड इन इंडिया देयर वाज सोशल इनइक्वालिटी. तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रोविजंस बनाए जाएंगे, जब भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज बनाए जाएंगे, जब कानून बनाए जाएंगे, तो उसमें क्या होता कि सम ऑफ द सर्विसेज, सम ऑफ द गुड्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. ये सोशलिज्म का एग्जैक्टली अपोजिट होता है कैपिटलिज्म. तो ये टर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज सोशलिज्म एंड व्हाट इज कैपिटलिज्म, एंड आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल विथ यू व्हाट इज socialism, what is capitalism, what is mixed economy. All these things I will be discussing with you in Indian economic class. बस यहाँ पर अभी आपको ये समझना है
सोशलिज्म का मतलब होता है या सोशलिस्ट कंट्री का मतलब होता है सम ऑफ द गुड्स एंड सम ऑफ द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू द पीपल. फॉर एग्जाम्पल, like colleges and schools are run by the government. Some of the services like railways, air services, bus services are provided by the government. And as well as some of the important foods, like for example इंडिया में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब इंडिया में जो राशन के जो दुकान होते हैं वहां से राइस प्रोवाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. Government also provide you free food. Government also provide you some subsidies. Government also provide you facilities like अगर आपको PhD करना है या आपको अगर मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करना है, ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट. तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि कुछ चीजें जो हैं, लाइक नॉट कुछ चीजें बट because India was an unequal society, all these things cannot be afforded, all these things cannot be brought by all the people, and that is why what has done कि कुछ चीजें गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है. करेक्ट. एंड व्हाट आर दोस थिंग्स, लाइक सोशलिज्म का बेसिक सिंपल मतलब यही है कि गवर्नमेंट ये सारे जो चीजें प्रोवाइड करता है, स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटल, रोड, गवर्नमेंट रोड बनाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें देता है, जैसे कि एलपीजी गैस में सब्सिडी देता है, गवर्नमेंट ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है, लाइक लैपटॉप प्रोवाइड करता है. जैसे जैसे जरूरत होती है वैसे वैसे गवर्नमेंट उस समय में वो डिसीजन लेता है. राइट. आपने सुना होगा रिसेंटली जो इलेक्शन जो हो रहे थे, the elections which are being held in Madhya Pradesh, Rajasthan, then other states, even in Karnataka, Telangana, etc. आपने देखा होगा कि majority of the political parties they were promising that कि ये सारे चीजें हम आपको provide करें. तो ये क्यों provide कर रहे हैं? Like why the government is deciding that says that we will providing it to you, because हमारे constitution में ये कहा गया है कि जो socially backward हैं, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, या दोज पीपल हु कांट अफोर्ड टू गेट दिस गुड्स और सर्विसेज बाय देमसेल्व्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं इंडिया में जो खुद से अपना फूड खरीद नहीं सकते हैं, खुद से प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, या प्राइवेट कॉलेजेस में एजुकेशन नहीं ले सकते हैं, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे अपना इलाज नहीं कर सकते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ चीजें फ्री में प्रोवाइड करता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशलिज्म. अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशलिज्म? इज इट क्लियर? Yes, please raise your hand, like Riddhi and Kajal and Yash. You understood what is the meaning of socialism? तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ द प्रोविजंस which are there in the constitution, it asks the government to provide certain facilities to the people free of cost and or at low prices. Is it clear what is the meaning of socialism? समाजवाद का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को कुछ चीजें प्रोवाइड करनी चाहिए लोगों को. क्यों प्रोवाइड करना चाहिए? बिकॉज इंडिया इज नॉट अ इक्वल सोसाइटी. सो टू मेक एवरीबडी एट अ इक्वल लेवल, सारे लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए, या जो लोगों के पास में ये रिसोर्सेस अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए ये सारे चीजें प्रोवाइड किया जाता है. सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं which makes our constitution a socialist constitution. क्लियर? इसका अगर इकोनॉमिक डेफिनेशन अगर देखा जाएगा सोशलिज्म का मतलब क्या है? इट इज अ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच majority of the goods and services or all goods and services are provided by the government. Got it, Sahil? Yes, sir. सोशलिज्म का मतलब क्या होता है? Like some of the goods and services are provided by the गवर्नमेंट. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट. तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ प्रोविजंस हैं जो इसको सोशलिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है. क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट द नेचर और फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज सेक्युलर. तो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या इंडिया एक जो कंट्री है, ये एक सेक्युलर कंट्री है. सो कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? हम इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाना चाहते हैं, तो इसका क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म हिंदी में इसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है. लाइक आपने स्कूल में इस चीज को पढ़ा होगा. व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ सेक्युलर और व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ धर्मनिरपेक्ष? यस यश, क्या लगता है आपको? Sir, something which is not connected with the religious. Very good.
देखिए जो भी मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, मतलब वट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग टू यू, आई एम नॉट आस्किंग एनी न्यू क्वेश्चन टू यू, यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑल दिस टर्म्स, यू हैव ऑलरेडी यू नो, आपने अब आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, आप स्कूल में आपने पढ़ा है, बस क्या है ना, आपको बस एक्सप्लेन करना है, आपको जो भी पता है उसके बारे में उस कंसेप्ट को क्लियर करना है, दैट्स इट, ठीक है। यस यस यू आर राइट, लाइक सेक्युलर का मतलब होता है दैट समथिंग दैट इज नॉट रिलेटेड टू रिलीजन, राइट। Now Yes, tell sir. me, now tell me how a country can be a secular. Now tell me, can a person be a secular? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हो या मैं हूं, क्या मैं सेक्युलर रह सकता हूं? लाइक फॉर एग्जाम्पल, being secular, does it mean that I will not follow my religion or you will not follow your religion? क्या इंडिया में, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाउ आई विल आस्क अ क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे, इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष देश है, ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस, आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। तो इसका मतलब क्या, इंडिया के लोग रिलीजन को नहीं फॉलो करते हैं? डू द पीपल ऑफ इंडिया डोंट फॉलो द रिलीजन इंडिया? क्या रिलीजन को फॉलो न करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? यस यस, व्हाट डू यू थिंक, फॉलोइंग रिलीजन इज अलाउड और इट इज नॉट अलाउड? Sir, यू गॉट माई क्वेश्चन? yes, sir, yes, sir. मैंने आपको ये पूछा धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, व्हेन आई से दैट इंडिया इज अ सेक्युलर नेशन, डज इट मीन दैट पीपल ऑफ द कंट्री विल नॉट फॉलो द रिलीजन? No, sir, no. ठीक है, आप क्या देखते हो, इंडिया में लोग रिलीजन को फॉलो करते हैं या नहीं करते? करते हैं ना सर? यस करते हैं, ठीक है। सो सेक्युलर का मतलब क्या होता है, लाइक यहाँ पर अगर हम देखेंगे, लाइक व्हेन वी सी दैट इंडिया इज अ सेक्युलर, इट मींस दैट कि द पीपल ऑफ द कंट्री विल फॉलो द रिलीजन, पीपल ऑफ द कंट्री विल फॉलो द रिलीजन, बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं। Got it? Yes. What is the meaning of secularism? मतलब जो Yes, sir, yes. गवर्नमेंट होता है, लाइक यू नो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द स्टेट गवर्नमेंट, यू नो द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम होता है ना, जिसे हम स्टेट कहते हैं, आई विल बी डिस्कसिंग विद यू लेटर ऑन। सो गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं। तो सेक्युलर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेक्युलर? इज यू नो देयर विल बी नो इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजन इन गवर्नमेंट। जब भी कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी, जब भी कोई गवर्नमेंट कोई यू नो कोई लॉ बनाएगा, तो वो लॉ किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करने के लिए पॉलिसी नहीं बनाएगा। तो सिंपल थिंग है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलरिज्म का मतलब होता है यू नो पीपल विल फॉलो द रिलीजन according, like whatever हम देखेंगे, we will be discussing the provisions in the constitution, like what provisions are there in the constitution with respect to following the religion, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बस यहाँ पर अभी आपको क्या ध्यान में रखना है कि इंडिया एक सेक्युलर नेशन है, इसका मतलब क्या है कि नो यहाँ पर गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, या राष्ट्र का अपना कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन नहीं होगा। लोग रिलीजन को फॉलो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन, डिक्लेयर्ड रिलीजन नहीं होगा। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीइंग सेक्युलर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग सेक्युलर। सो इसका मतलब ये नहीं कि लोग रिलीजन, लोग सेक्युलर, पीपल विल बी रिलीजियस बट नेशन विल नॉट बी रिलीजियस, या यू नो द गवर्नमेंट विल नॉट बी रिलीजियस। क्लियर? अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म? मतलब क्या है कि नो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या सोलम रेजोल्यूशन लिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया have decided to make India a sovereign country, make India a socialist country। मतलब you know गवर्नमेंट जिन लोगों को जरूरत है उन लोगों को फ्री में या कम कीमतों में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि रेलवेज है, या यू नो बस सिस्टम है, या हॉस्पिटल्स है, या एजुकेशन है, या रोड्स है, एक्सेट्रा। देन गवर्नमेंट का कोई रिलीजन नहीं होगा, दैट इज इंडिया, द स्टेट एंड गवर्नमेंट विल नॉट बी हैविंग एनी रिलीजन, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज बीइंग सेक्युलर। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इंडिया विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट? इट विल बी अ what, like we want to create, make India into be a sovereign, socialist, secular and democratic। what is the meaning of democratic? डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया अबाउट इट? यस साइड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक? ऑल ऑफ यू नो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया एक लोकशाही देश है,
So what is the meaning of democracy? Literal meaning क्या है वो आप मुझे बताइए. I'll explain you the concept. Sir, means people rule. People have the power to elect the government. Yes, yes. Demo मतलब होता है people या population, and कृषि का मतलब होता है rule. So the literal meaning of democracy is the rule of people. All of you agree with me? डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि रूल ऑफ पीपल होगा. मतलब रूल ऑफ पीपल मतलब क्या, कि जो भी वट एवर द डिसीजंस आर टेकन, दैट डिसीजंस आर टेकन बाय द पीपल. नॉट टेल मी, क्या फिर लोग एवरीबडी इज अ किंग है क्या इंडिया में? क्या एवरीबडी इज एमएलए और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नो. Yes, of course, India is democratic country, but इस democracy country में हम क्या करते हैं? We choose certain representatives. हमारे कुछ representatives को हम elect करते हैं या उनको हम चुनाव करते हैं. Like we choose our corporator, we choose our sarpanch, we choose our MLA, we choose our MP. So these MLAs and MPs and sarpanch and corporator, जो भी पार्षद होते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं? ये हमारे डिसीजन लेते हैं. जैसे शुरुआत में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि सोवरेन का मतलब क्या होता है? ऑफ कोर्स इंडियन, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय ऑल दिस पीपल. बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इंडिया इज अ रिप्रेजेंट, यू कैन से इलेक्टेड डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लोग डिसाइड करते हैं कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा. ऑल दिस थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द पीपल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डेमोक्रेसी. ठीक है. Now, last important nature of the Indian Constitution is called a republic. Do you know what is the meaning of republic? Have you ever heard the term republic earlier? Yes, yes. इससे पहले आपने शायद ये republic word सुना होगा. We do celebrate Republic Day. Do you know on which day we do celebrate the Republic Day? Yes, sir. 26 January we celebrate Republic. So जब हम Republic Day celebrate करते हैं, like 15 August 1947 is our independence day, but 26 January is our Republic Day. So what is the meaning of Republic Day? Like हम क्या करते हैं exactly? Republic का मतलब क्या? Any idea? यश, स्कूल में भी आपने देखा होगा, हमने स्कूल में टू सेलिब्रेट इट. सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिपब्लिक? बिकॉज इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन. कहते हैं ना कि इंडिया एक रिपब्लिक नेशन है. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ इट? सागर, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक नेशन? Yes, sir. Republic means the head of the state is elected by the people. राइट. अब देखिए यहाँ पर दो टर्म है. वन टर्म इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक एंड वन टर्म इज कॉल्ड रिपब्लिक. सो रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक, these are two different concepts. मतलब it is not necessary that all democratic countries are republic. मतलब there are many countries in the world which are democratic, but they are not they are not republic. For example, take an example of England. I will explain you with examples so that you can understand it. England is a democratic country. मतलब why India is a democrat? Why England is a democratic? Because England में the prime ministers are elected, MPs are also elected, MLAs are also elected. But head of the state of the England is hereditary position. मतलब इंग्लैंड का जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, कंट्री का जो हेड होता है, दैट इज क्वीन और किंग. राइट. यू मस्ट हैव सीन रिसेंटली द क्वीन ऑफ द इंग्लैंड हैज डाइड. उसके बाद नेक्स्ट हेड ऑफ द स्टेट कौन बना इंग्लैंड में? यस, एनी आइडिया? सर उनकी फैमिली से बने, मुझे इतना पता है. कौन है पता नहीं सर. ठीक है. मतलब द फर्स्ट सन ऑफ द क्वीन हैज बिकम द किंग ऑफ द इंग्लैंड. सो वहां पर क्या देखिए, हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, इट इज एन हेरिडेटरी पोजीशन. जैसे कि द किंग, व्हेन द किंग डाइज, द सन ऑफ द किंग बिकम्स द हेड ऑफ द स्टेट. सो सच टाइप ऑफ कंट्रीज आर कॉल्ड एज मोनार्की. मोनार्की का मतलब क्या होता है? मोनार्की, और यू कैन से दे आर नॉट रिपब्लिक्स. Got it? So England is a democratic country, but it is not republic. Why it is not republic? Because head of the state is not elected by the people. Right? Take an example of America. America is also a democratic country, and America is also a republic country. Why it is a republic country? Sahil, why America is called as a republic country? Sir, because American prime minister and presidents are elected by the people of their country. Okay. In America, there is no post called prime minister. Sahil.
Like, you Yes, know, that sir. is why the They topic, only have president. Yeah. the topic, you remember the comparison of Indian constitution with other countries. Yes, तो जब हम sir. कंपैरिजन करेंगे ना, तो आपको ये पता चल जाएगा कि जब when we compare the Indian constitution with America, we come to know that कि इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, लेकिन in America there is no post called prime minister, there is only president. Yes, sir. And I one remember. more important difference between India and American president is that in India the president of India is not directly elected by the people. मतलब इंडिया के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो लोग नहीं चुनते हैं, कौन चुनते हैं? The president of India is elected by the MPs and MLAs, while the president of America is, you know, directly elected by the people. People vote to the president. So now we can see that America is a democratic country and it is also a republic country. But what is the slight difference between India and America? That India is also a democratic country, India is also a republic country. And America is also a democratic country and America is also a republic country. But what is the difference is that in America, the president is directly elected by the people, while in India, the president is indirectly elected by the people. So what is this direct election? What is this indirect election? What is the process of the election of the president of India? That I will be discussing with you later on. But anyways, बस यहाँ पर रिपब्लिक का मतलब क्या समझना है कि the country in which the head of the state is elected by the people, again the term is, you know, fixed, मतलब उसका एक term fix होता है. ऐसे नहीं है कि once a person is elected as a president or once a person is elected as a king, so he will be president forever. No, it's not like that. मतलब जो भी head of the state है, चाहे वो prime minister हो, चाहे वो president हो, he will be having a fixed term. Like maybe it may be for 4 years or it may be for 5 years. Like in India, the president of India is elected for 5 years, and again after 5 years, the new president of India is again elected by the MLAs and MPs. The same person can be continued, or you know, the new president can be elected, but again election takes place. So two important, you know, things you need to remember whenever I say that, you know, a country is a republic. One is that, you know, that head of the state is elected by the people and his term is fixed. It may be for 5 years, it may be for 6 years, it may be for 3 years. Some countries in the world, they are also having the term for 1 year. So India में provisions के, in India में the president of India is elected for 5 years. That I will be discussing with you. Understood? Yash, what is the meaning of republic? मतलब इंडिया का जो president है, head of the state जो है, वो लोग elect करते हैं. It is not a hereditary, you know, on the post. मतलब राष्ट्रपति का बेटा ही राष्ट्रपति बनेगा, या राष्ट्रपति के जो फैमिली में है वही अगला राष्ट्रपति बनेगा या राजा बनेगा, ऐसे नहीं है. इंडिया इज अ रिपब्लिक नेशन. तो जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना 26 जनवरी को, वी सेलिब्रेट दिस रिपब्लिकनिज्म. यू नो कि इंडिया का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, लोग डिसाइड करते हैं, ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन या कोई पर्टिकुलर फैमिली बनता है. क्लियर? Is it clear to you, Sagar and Sahil? Yes, sir. And one more example, a country like there are some countries in the world which is republic but that not democracy. For example, China. Do you know what is the official name of China? PRC, sir. People's Republic of China. Yes, it is called People's Republic of China. So China जो है, that is a republic country. Like England, democratic country है, but it is not a, you know, republic. India is both republic as well as democratic. America is both democratic as well as republic. But American president is directly elected by the people, but Indian president is indirectly elected by the people. Right? While China is a republic country, but it is sometimes not called as a democratic country. Why do you think what China is not called as a democratic country, but it is called as a republic country? Sir, Do you have any because idea? the people does not elect the leader. People do not elect it. Okay. जब हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर या एमपी और एमएलए को जब हम इलेक्ट करते हैं, तो इंडिया में यू नो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं. देयर आर डिफरेंट कंटेस्टेंट्स, देयर आर डिफरेंट, यू नो, वी कैन से उम्मीदवार, एंड उनमें से हम किसी एक को चुनते हैं. चाइना में वैसे नहीं है. इन चाइना देयर इज अ सिंगल पार्टी सिस्टम. लाइक इन इंडिया में वी डू हैव अ
we do have the multi-party system. मतलब इंडिया में क्या मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में लोग डिसाइड करते हैं कि whether Rahul Gandhi will become the prime minister or whether you can say who is the current president of India now? द्रौपदी मुर्मू. द्रौपदी मुर्मू. एंड द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट में किसी व्यक्ति ने इलेक्शन लड़ा था. व्हाट वाज हिज नेम? Elections were held, right, for the president of India. Anyone remember who contested elections for president of India from opposition party against Draupadi Murmu? Sir, Yashwant Sinha. Yes, it was Yashwant Sinha. Good, Sagar. ठीक है. आप यहाँ पे कैसा है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा, यहाँ पर इलेक्शन होता है. इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाता है कि who will become president or who will become prime minister or who will become MP or who will become MLA. But in China, head of the state is elected and his term is also fixed. But in China, there is no multi-party system. In China, there is only one, you can say, on the political party. वहाँ पे एक ही political party, that is called Communist Party of India, and that Communist Party of India decides who will be the prime minister or who will be the president of China. So that is why China is a republic country, but it is not called as a democratic. So understood the difference between democratic and republicanism? Like England is a democratic, but it is not a republic. India is both democratic as well as a republic. America is also democratic, but it is also republic. But difference between England and India and America is that India president is indirectly elected, while in America the president is directly elected. अब ऐसे क्यों है? Like why in India the president is indirectly elected, why in America the president is directly elected? What are the drawbacks of that? What are the positives and what are the negatives of such system? And why India has adopted such system where the president is indirectly elected? So that all things we will be discussing. जब हम president को जब हम in detail में discuss करेंगे, powers and functions जब हम discuss करेंगे तब हम देखेंगे. ठीक है. तो ये जो system है इंडिया में, where there is a prime minister, there is the president. Such type of system is called as parliamentary democracy. तो इंडिया में डेमोक्रेसी है, बट इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी है? This democracy is called as parliamentary democracy. तो what is the meaning of parliamentary democracy? या संसदीय लोकशाही पद्धति जो है, इसका मतलब क्या है? That we will be discussing in detail later on. All of you understood? So you can see the first paragraph of the Indian Constitution को आज हमने समझ लिया, उसको समझा है that we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure India into a ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे. So we will stop it at today. I hope all of you people are understanding. समझ में आ रहा है सभी को? यश, रिद्धि, Yes, sir. Yes, and sir. Usaid, if you all people are understanding, please raise your hand. We will stop it here now. We will go by slow. Tomorrow we will be discussing the remaining part of the preamble, that what is the meaning of justice, liberty, equality. This is one of the important topics. उसको हम discuss करेंगे in detail. ठीक है? I will be sharing this a document with you. So try to understand what is the meaning of each and every word. Clear? Yes, Riddhi, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो you can unmute yourself and you can ask a question. Or if you understood, just give a thumb. If it is comfortable or if you can, yes. Thank you so much. So we will stop it here now. We'll continue tomorrow with the remaining topics. हम थोड़ा सा धीरे-धीरे जाएंगे. मुझे लगता है maybe in the beginning you may not understand each and everything. और जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम इन चीजों को समझेंगे, हमें पता चल जाएगा. ठीक है? Swapnil, is it clear to you? Fine. So we'll stop it here now. We'll continue tomorrow at the same time in the evening. And all of you people, if you are free in the morning, I request all of you to join the newspaper classes as well. Yes, sir. Yes, sir. All of you take care.